Okay, so coming back to the point, हमारा task ये था कि in practice we may have something like this, कोई process हो सकता है, or we may have the detailed equation of this model, so वो भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है. We already have discussed this कि ये कहाँ से आई थी in class. Now having this equation, differential equation, I asked you one thing. If you see 2.17, 2.17, is this a linear equation? 2.1 and 18, is this a linear equation? ये दो सवाल हैं, आप लोग इसको जवाब सोचिएगा. I will continue. और ये दो differential equation चाहे वो linear हैं या non-linear हैं, we can continue और हम उनको discretize कर देते हैं. ये हमने इस तरह से उनको डिस्क्रिटाइज कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में. और ये एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जो हमने सोचा है कि हम इस तरह से काम करेंगे, राइट. और सो नाउ आई विल क्लिक हियर LabVIEW. मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से होगा. देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग. मैं इसमें किसी किस्म का कोई फंक्शन यूज नहीं करूंगा. द ओनली थिंग दैट आई विल ऐड हियर इज the capability of MATLAB. So यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, that will be MATLAB script. LabVIEW की एक बहुत इंटरेस्टिंग सी इंटरफेस है MATLAB के साथ, and that we will be using here inside our for loop. ये MATLAB स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे inside the for loop to implement coding style the ODEs. ठीक है. So okay, let's create a project, simple project, blank project. Okay, we can go for the blank project, right. So let's go to the अच्छा, जब हम यहाँ पे आ गए तो we can think about it. फ्रंट एंड को हम चलें थोड़ी देर में देखते हैं और ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है. नाउ इन ब्लॉक डायग्राम जो हमने डिसाइड किया था, इसको मैं लेफ्ट पे कर देता हूँ ताकि ये भी आपकी नज़र में रहे if needed, otherwise. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, we can right click and bring something called maybe a for loop. ठीक है, आप बाहर कोई for loop भी लगा सकते हैं completely. Let's say this is the complete loop here, and there is a stop button. Create a create a control, stop button create हो गया. और now inside this let's create a structure. तो हमने कहा था कि हम इसको फ्लैट स्ट्रक्चर पर रखेंगे, so I will have one flat structure here. It is getting large. Small window will work for us. ठीक है, ये एक आपने ये स्ट्रक्चर ऐड कर दिया, and then you can right click sequence है जैसे, and then we have add frame after, so add frame after this second one. और इसके अलावा मैं एक और फ्रेम ऐड कर लेता हूँ for display purposes, right. अच्छा, अब आउटर स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारे सिस्टम का, उसमें हमने कहा था कि ओके वी विल हैव द वेरिएबल्स. तो अगर हम इसमें जाके देखें तो वी विल हैव वी नीड समथिंग कॉल्ड, अभी मैं आपको दिखाने के लिए फ्रंट एंड पे हम देखते हैं. तो फ्रंट एंड पे लेट्स से वी विल हैव, अभी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज योर some input variable was, let's say this is w1, and then I have another variable here that I will call
let's say x1, or the third one is this is x2. अच्छा, ये जितने भी variables हैं, they are basically the disturbance variables. क्लास लेक्चर हम एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं, किस स्टडी को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. W1, X1 और X2 दे आर डिस्टर्बेंस वेरिएबल्स. और मैं इसका जो करस्पॉन्डिंग राइट हियर, ठीक है. सो इसमें से हमने तीन वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लिया है हियर. सो अब इसमें से कौन कौन से डिस्टर्बेंस वेरिएबल्स हैं? वी हैव डिस्टर्बेंस वेरिएबल्स W1, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. We also don't have control over X1, and also we don't have control over, let's say, X2, ये disturbance variable. Okay, then we have different situations हो सकती हैं. जो situation अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसके अंदर हम इस assumption के साथ अभी continue करेंगे. So, and then we have this is W, और assuming कि output जो है that is in, and then we have W2. Or W2 जो है, this is in our control, and W is also in our control. So let me call them आवाज और ये स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? This is let's say देखिए, ठीक है, ये हमारे मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स हो गए. ओके, इज इट क्लियर? राइट. अच्छा, मैनिपुलेटेड वेरिएबल का मतलब ये है कि here we will have control. So there might be some kind of control valve in our control, and also ये जो W है इसका flow out जो है, flow out rate of mass out. So this may also be having some kind of a valve, और ये जो है, this is connected with this flow transmitter here, FT, और flow transmitter जो है वो आपको let me follow the standard right here. So flow transmitter will be here, FT, and then it will electronically send signal to some flow maybe FIC, means flow indicator and controller, which is connected to this one. Okay, so ये flow control की through जो है we can control it, and this might be in our control using our PID controller. ठीक है, ये हमारे system. So we have two manipulated variables and we have three disturbances, and then we also have something called two states. Two states, और वो states कौन कौन सी हैं? We have let me use another color for that. And then we have two states, and these states are, कोई मुझे बताएगा? The state is W, the hold up or the volume कितना इसके अंदर है, and the X. ठीक है, और गौर से अगर हम देखें तो we have basically the differential equations, ODEs, actually tell the dynamics mix of states. ठीक है, कम जगह लेकिन मैंने mention कर दिया. Okay, so we have, this is the state and this is another taken as a state. Okay, now जब आप फ्रंट एंड पे ये सेट कर देंगे तो इंटरनली वी विल हैव दीज थिंग्स अवेलेबल हियर. इनको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड के ऊपर, एंड लाइक दिस, एंड इसको थोड़ा सा हम नीचे ले जाते हैं नाइसली. ओके, इसको स्मॉल कर देते हैं. नाउ
इक्वेशंस कहाँ पे आप आपके पास आएंगी? अब सेकंड वाले के अंदर यहाँ पर हम आते हैं और वी विल ब्रिंग अ फॉर लूप और इक्वेशंस अब आपको इम्प्लीमेंट करनी है। आपको इक्वेशंस कैसे इम्प्लीमेंट करनी है अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लेके आते हैं फॉर लूप। फॉर लूप की बल्कि फॉर लूप से भी पहले मैं अभी आपको स्क्रिप्टिंग नोड दिखा देता हूँ। So if we see here and try to find the script node, yeah, formula node, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में formula node में आप जाएं, right click, mathematics, where is it? Mathematics, हाँ यहाँ पे mathematics में script nodes, script nodes में scripts, ठीक है। So we can take a snap here, okay, this one, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पर मैटलैब स्क्रिप्ट को ऐड कर दें। नाउ दिस इज अ मैटलैब स्क्रिप्ट। इस यहाँ पे अब आप मैटलैब की तरह जो भी आप क्वेश्चन लिखना चाहें वो कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट नाउ। और इसको अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे हम वापस आते हैं एंड इफ देयर इज एन आइलर मेथड जो भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। सो दिस विल बी लाइक इफ आई एम कैलकुलेटिंग v v will be equals to the old v, okay, so v of k plus 1 will be equals to v of k plus let's say h, delta h is h times, and then you have 1 upon rho ro h rho. So rho का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू भी आप फ्रंट एंड से दे सकते हैं। तो I will add another thing, क्या हो गया, what next? Okay, equation was visible but now it is not, okay, okay, but I remember। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैड w1 of k plus w2 of k minus w of k, right? So this is how your first equation will be written। और k of course you have to provide k आपके पास just like a tick, it will अगर k आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो अच्छा, ये पूरी एक इक्वेशन आ गई, ये बात समझ में आई यहाँ तक? ये इक्वेशन आपके पास बन गई है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसकी वैल्यूज कहाँ पे आएंगी, किस तरह से आएंगी। एंड बट वी नो आपको आर ओ एच जो है इसकी वैल्यू देनी होगी। तो आर ओ एच आई कैन कम हियर इन द फ्रंट पैनल और यहाँ पे मैं पैरामीटर्स डिफाइन कर देता हूँ, पैरामीटर्स। और इन पैरामीटर्स में यू कैन थिंक अबाउट प्लेस हियर जहाँ पे आप इसको वैल्यू दे देंगे आर ओ एच रो, ठीक है। और जब आपने इंट्रोड्यूस कराया तो रो को देखें, इसका न्यूमेरिकल यहाँ पे आया है, इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं नाउ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और इस फर्स्ट इक्वेशन को अब आपने स्टार्ट करना है, इसको वैल्यूज देनी है। तो वैल्यूज देने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए, यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ इनपुट, ऐड इनपुट, ऐड इनपुट एंड गिव इट समथिंग कॉल्ड रो, आर ओ एच। रो को अभी हम ऐड नीचे ऐड करते हैं। लेट्स से द फर्स्ट वन विल बी w1, ओके। एंड और इस w1 से आप यहाँ पर लेके आए, क्लिक कीजिए एंड देन बाय वायरिंग यू कैन कनेक्ट। सो w1 विल बी पास टू दिस वन। सिमिलरली एक और नोड आप ऐड कर लें, यहाँ पे राइट क्लिक ऑन द बॉर्डर, ऐड इनपुट, so and give it the name, let's say w, and then wire it। So you will have the
दिस W अवेलेबल हियर। जब आप W कैलकुलेट करेंगे आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली वी कैन गो एंड ऐड फॉर x1 एंड देन कनेक्ट दिस डायरेक्टली टू दिस वन। और इसके अलावा हमें W2 भी चाहिए होगा। सो जितने भी आपके पास थे उन सबको हम इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको नाम देते हैं W। बाय द वे यू कैन गिव न्यू नेम, तो वो यहाँ अंदर जो है जो नाम आप यहाँ पर देंगे वही आपके स्क्रिप्ट के अंदर वो वेरिएबल अवेलेबल होगा। ऐड अनदर इनपुट, लेट्स से x2, इट इज कनेक्टेड हियर। और रो के लिए आई विल ऐड अनदर वन ROH और इसको इससे कनेक्ट कर, ठीक है। दिस इज द वे हमने इसको इनपुट दे दिया। नाउ द प्रॉब्लम इज भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इस चीज़ को अब आपको सिमुलेट करना है, सो इट्स बेटर। अच्छा, उसके बाद इफ़ यू नीड टू सेंड समथिंग आउटसाइड, सो ऐड आउटपुट नोड एंड लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द V। और राइट साइड पे क्लिक करें एंड वी ब्रिंग सम काइंड ऑफ ग्राफ। वेयर इज द ग्राफ? फ्रंट एंड के ऊपर जाके देखते हैं वहाँ पे ग्राफ। यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड अ ग्राफ, वेवफॉर्म चार्ट हियर, स्मॉलर वन। अच्छा, हमें दो चाहिए होंगे, दो स्टेट्स हैं आपकी, तो एक आपके पास ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी फॉर फर्स्ट इक्वेशन V, और एक और जो आपके पास ग्राफ होगा दैट विल बी फॉर द सेकंड स्टेट। हर स्टेट के लिए आप एक ग्राफ यूज करें, ठीक है। आप और इसको प्रॉपर्ली नाइसली बना सकते हैं। दिस विल बी x, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि आप लोगों को CP विल टेक गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, ओके। अच्छा, अब हम बैक पे जाएंगे। लेट मी टेक अटेंडेंस राइट नाउ। ओके, ओके, सेव नहीं किया था तो सेव इट। डेमोज और demos for demos for 436 21. Okay, so this is example 1. Okay, so this V will come here, और इसको हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। Now there is a problem, और राइट नाउ हमारे पास x नहीं है। x की इक्वेशन को भी हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो x की इक्वेशन क्या बनेगी? x की इक्वेशन अगर हमें याद है तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ से x की इक्वेशन अभी जो हमने बनाई थी was here, ठीक है। x of k plus 1, x of k plus 1 will be equals to x of k। अब ये देखें LabVIEW के अंदर आप सर हमारी दूसरी क्लास है अभी शुरू हो गई होगी 9:30 बजे से। 9:30 बजे, 9:40 तक है आज तो। नहीं सर 9:30 तक, फ्राइडे हाफ आवर की होती है ना। हाफ आवर की है तो 9 मैंने, चलो ठीक है। यहाँ पे आप सेकेंड इक्वेशन को लॉन्च करेंगे, ठीक है। एंड देन यू विल बी एबल टू, इसको आप फिर अपना हिसाब से रन कीजिएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपके पास चलेगा। एंड द बैक एंड आई जस्ट शोड यू कि ये दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, ठीक है। चलो मैं अभी यहाँ से एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।